Right. Right. Okay, so I don't know how many of you are online, but this is something that I'm trying out for the first time, wherein I'm going to be doing sort of a 2 minute news series where I will take you guys through the various different Facebook groups on Arowana, and I'll show you some of the interesting posts that are there on each of these groups. Okay, so I hope this is going to be interesting. We'll try it like once or twice a week. We'll start with Aropedia, our very own group, and as you're aware that there is a contest that is running here on Aropedia, which is the Aropedia 5K contest. And in this 5K contest, you can actually win an arowana, albino silver arowana. The contest has already started as of the 6th of September at 12 p.m., and it is going to be ending on the 12th of September at 10 a.m. So all you have to do is put some informative posts regarding arowanas in Aropedia, and those posts have to be related to arowana in some way or the other. अच्छा तो सर्वजीत सॉरी हिंदी में बात करना है, चलो ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा चलो हिंदी में बात करते हैं। तो अभी ये देखो आप, ये अपना आरवाना कॉन्टेस्ट चल रहा है, आरवाना 5K कॉन्टेस्ट, और इसमें आपको अरवाना के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव पोस्ट डालने होंगे। ठीक है, तो अगर आप ये इंफॉर्मेटिव पोस्ट डालोगे, सबसे ज़्यादा जिसने इंफॉर्मेटिव पोस्ट डाले होंगे उसको एक अल्बाइनो सिल्वर अरवाना मिलेगा एज ए प्राइस। ठीक है, तो कॉन्टेस्ट चालू हो गया है। इट हैज स्टार्टेड ऑन द 6th of September, 12 बजे चालू हो गया। 12 सितंबर यानी कि सैटरडे तक टिल 10 a.m. इट इज़ गोइंग टू बी लाइव दिस कॉन्टेस्ट। सो इफ़ यू गाइज वांट यू कैन टेक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट। इसमें आपको एक सिल्वर अल्बाइनो सिल्वर अरोना मिल सकता है, तो आप इसमें हिस्सा लीजिए और एक सिल्वर अरोना जीतिए। तो ये एक चीज़ थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पोस्ट आए हैं, एंड आई वांट टू स्पेशली थैंक रिकी एंड्रूज। ही हैज़ बीन सेंडिंग अ लॉट ऑफ गुड पोस्ट। तो आप लोग आरोपीडिया में आइए, और बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट आए हैं विच आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, अरवाना रिलेटेड पोस्ट। अभी जैसे कि देख रहे हो, इस यहाँ पे एक आया है पोस्ट, टेल बाइटिंग इन अरवाना। तो ये टेल बाइटिंग इन अरवाना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोगों को ये इश्यूज आती है, टेल बाइटिंग इन अरवाना। माई अरवाना हैड दिस इशू, मेरे अरवाना में भी ये इशू हुआ था। तो इसमें आप आइए, यू कम इन टू आरोपीडिया, हैव अ लुक एट ऑल ऑफ दीज। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोस्ट हियर, दैट वाई टेल बाइटिंग हैपन्स इन अरवाना। उसके बाद यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इज़ फीडिंग अर्थवर्म गुड फॉर अरवाना? माई अरवाना लाइक्स अर्थवर्म्स टू मच। तो यहाँ पे एक और चीज़ है जहाँ पे किसी ने सवाल पूछा हुआ है। मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर दिखाना चाहता था। ये एक देखो, विक्रम तमाग जी ने डाला हुआ है एक पोस्ट, जहाँ पे ही स्पोकन अबाउट YTL। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा पोस्ट आया हुआ है। यहाँ पे मैंने भी सवाल पूछा था उसको कि ये YTL है क्या। उस पर विक्रम ने कुछ अजीब सी चीनी चीनी जैसा मुंह बना के कुछ डाला है यहाँ पे। जैकली चिनान सेज दैट स्वीट कॉर्न। Then Ricky Andrews has put something on arowana scale color and base color, so that is another thing which is interesting. तो ये काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग पोस्ट आई हुई है। रिकी एंड्रूज हैज पुट अनदर सम इंटरेस्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोस्ट विच इज़ ऑन अरोवाना टैनिंग लाइट। तो हमको ये सवाल बहुत रहता है अबाउट अरोवाना टैनिंग लाइट। तो ही इज़ रिटन दैट विच वन टू चूज़, 10,000 केल्विन का चूज़ करे या 14,000 या 20,000 केल्विन का। एक और वहाँ पे रहता है जनरली 6,500 केल्विन का, जो गोल्डन अरोवाना के लिए बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे इन्होंने जो सारी बताई है वो दोज आर गुड फॉर रेड अरोवानाज एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग इज़ देयर। तो ये काफ़ी एक अच्छी पोस्ट है। तो आप लोग यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दिस वेरी इंटरेस्टिंग पोस्ट ऑन द एंटायर टैनिंग प्रोसेस ऑफ अरोना और द लाइट्स दैट नीड्स टू बी चोजन। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, which has been put by Jackie Chinhan. This is how a real platinum looks like when they are young, is what he's saying. ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग सा एक पोस्ट है।
तो इसको अब आप देखिए आके, दिस इज अ नाइस इंटरेस्टिंग वन, देयर इज समथिंग ऑन ड्रॉपसी. So I can go on and on really. So basically क्या है ना, ROPT has got a whole lot of posts that have come in now, and I think it is getting to be very very interesting in here. तो अगर आप आरोपीडिया में हो तो आप आइए, ये go through all these posts. इतना information है अरोवाना related that you cannot become sort of experts now. और उसके अलावा आप अगर नहीं हो आरोपीडिया में अभी, तो लिंक में डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप जाके वहाँ पे लिंक पे आप आइए, और you join Aropedia and you get a lot of information there. So there's a lot of other posts. There are some here. There's something else that has come up. Uh, uh, some general pointers. So good stuff. There is platinum breeding as well. यहाँ पे post आया हुआ है Jackley का, which is on platinum breeding, which is also an interesting one. Of course, Nipur has put something as well. JJ Lilia says, just wanted to find out if it's possible to identify the arowana type by seeing some pictures of the parents of brood pair. So that's another interesting post here. तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पोस्ट आए हुए हैं, तो आप लोग देखिए इनको, गो थ्रू दीज पोस्ट. There's another group that I am generally part of, Arowana Dragonfish Lovers Club करके एक group है. यहाँ पे you can see some beautiful arowanas. Let me see if I can expand this and show you guys. This is a very beautiful arowana here. uh, ये रहा. HD में अपलोड नहीं करते ये लोग. So there's some here. So this is a nice arowana, nice food. जाते हैं कुछ और देखते हैं, कुछ और आरवाना है क्या. यहाँ पे कुछ और आया है. There's another nice arwana in here. Let's see if we have anything interesting. There is one here. Okay, let's go back. Let's see if there is any other nice arowanas being showcased in this group. There is some red arowana here. Nothing major. Look at this one. This one's a nice semi-short body. Let's have a look at this one. ये भी काफ़ी अच्छा था. और कुछ खास है क्या इस ग्रुप में, देखते हैं ज़रा. नहीं तो चलते हैं अपने. एक और ग्रुप है अपना, विच इज़, यार शॉर्टकट में तो दिख नहीं रहा है. देखते हैं यहाँ पे जाके कौन सा ग्रुप है. ग्रुप्स. अच्छा, इसमें शायद है नहीं, तो ये नहीं हो पाएगा. चलो मैं दूसरे वाले में देखता हूँ. So let me bring this up. यहाँ पे अपना अरवाना क्लब इंडिया है.
ये तो नहीं है. अपना ग्रुप कहाँ गया? अपना ग्रुप ये रहा. हाँ. So this is the other group that I manage. So let's see if there are some interesting posts that have come in this group. कनेक्शन ज़रा स्लो है आज, बट ठीक है. लेट्स सी व्हाट डू वी हैव. एनीथिंग इंटरेस्टिंग? अभी अगली बार से मैं क्या करूँगा ना, आई विल गो ओवर दीज डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है. और इसका मैं मतलब आई विल फाइंड आउट सम रियली गुड लिंक्स, और जहाँ पे अच्छी अच्छी अरवानाज शोकेस की गई हो वैसे सारे लिंक्स मैं निकाल के आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँगा. So you can see some really beautiful arowanas. अभी यहाँ पे देखो किसी ने बॉबी टीवीएम ने कुछ डाला हुआ है यहाँ पे. लग तो रहा है अच्छा खासा अरोवाना लग रहा है ये तो. ये देखो गोल्डन हेड टाइप का कुछ लग रहा है ये तो. सारी रात नींद ना आवे, मैनू बड़ा तड़पावे. बाप रे, कोई हिंदी गाना लगा के रखा हुआ है यहाँ पे तो. अच्छा, एस भरत, यू आर आस्किंग फॉर हाउ मेनी डेज टू क्लीन अरवाना टैंक. देखो यार, मैं तो क्लीन करता हूँ वंस अ वीक. ओके, आई डू अ वंस अ वीक क्लीनिंग ऑफ माई अरवाना टैंक, विच इज़ अराउंड 30-40%. एवरी सैटरडे या संडे को आई डू दैट. And a bigger water change once in the middle to do some scrubbing of the algae. So I think once a week, if you have good filtration, if you are just using standard top filtration, then you can probably do water change once in 2 maybe 3 days. 20% water change every 2 or 3 days if you have a top filtration. Yeah, Tejas, I saw that you're back, bro. Good, thanks for coming back, man. It's a bit lonely here because I don't have too many subscribers, so not too many people watching my live stream. But I'd like to do more live streaming in future, or rather, twice a week at least, so to make it interesting for you guys. Chalo, so all of you guys who are there online, if you have any other questions for me, you can ask me right away, or you can leave the questions in the comment section. कुछ और question है? सौरभजीत, हिंदी में बात करने के लिए बोला आपने, तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ. आपका कोई सवाल है तो पूछिए. As Bharat, I hope I have answered your question, man. Can I keep RTG and silver arowana? Yes, of course. Yes, of course you can keep RTG and silver arowana, bro. But the only thing is that in a community tank, you'll always there's always that occasion of them fighting with each other. But you cannot have one silver arowana with one RTG. That is going to be a disaster. If your RTG is aggressive, which they mostly are because they are an Asian, तो फिर तो आपकी RTG की आपकी सिल्वर अरोवाना की लग जाएगी. तो इन माय ओपिनियन नॉर्मली ऑड नंबर्स में रखते हैं, तो आप अगर मान लो 2 या 3 सिल्वर अरोवाना रख सकते हो एक आरटीजी के साथ, देन मे बी फाइटिंग थोड़ा सा कम होगा. The fighting will be a little less is what I feel. However, nobody can take any guarantees, and if you watch the King of DIY वाला channel, you will see that always उसके अरोवाना के tails या fins में कुछ ना कुछ कटा हुआ होगा. It will be torn and all of that. Okay, so yes, you can, but keep a lookout for the fights. Okay, thanks, man. Tejas, you got me covered. You're saying Alok, hello, how are you? Bharat, you're saying you're feeding dry shrimp. Yeah, I mean, anything, man. If your arowana is eating it, तो क्या problem है? It's cool if your arowana is eating it. Yeah, my arowana doesn't eat shrimp and all. वो तो prawns पे जिंदा है. Prawns and superworms, very finicky eaters. But you're lucky that your arowana is having dried shrimp. So good for you. How to cure drop eye? Yeah, see, Bharat, drop eye is not a disease. So let's be very clear in the first place. If you go to Aropedia, you will find there's a post on drop eye. Drop eye is not a disease. Okay, so please don't get confused that drop eye is a disease or something like that. तो ऐसा कुछ नहीं है. Drop eye is mainly due to one genetic reason, two because of arowanas mainly looking down, because something which is interesting नीचे उसकी तरफ देखता रहेगा, drop eye हो जाता है. The other reason being, which is the main reason, could be that deposit of fat behind the eye. तो अगर आप देखोगे तीनों चीज अगर आप देखोगे in a way, if for example it is for the first reason, if the first thing is that अगर वो genetic है, then anyways you cannot do anything about it. It's a genetic issue, so cannot be corrected. I'm not going to use the word cured because it is not a disease.
The second thing is if it is looking down because something is attracting it while it is looking down, then you need to remove that distraction and stop it from looking down and put some distraction on top. Maybe you can put some ping pong balls on top so it can start looking up, and hopefully it will correct itself. As far as fat is concerned, well, uh, the thing is that there are two ways of looking at it. The first way is a more standard way, rather I would say, which is giving exercise to your arwanas. अभी देखो आप फैट खाओगे तो उसको बर्न भी करना होता है. अभी वो 4 फीट 5 फीट के टैंक में क्या फैट बर्निंग होगा? आप तो प्रॉन्स खिलाते हो तो देयर बी फैट इन द बैक ऑफ द आई, ऑलमोस्ट रेस्ट ऑफ द बॉडी. तो उसको आप एक्सरसाइज कराओ यूजिंग अ वेव मेकर और समथिंग. Okay, but at the same time the other option is, which is universally used, is a surgery. इंडिया में तो सर्जरी उतना होता नहीं है. आई डोंट रियली नो पीपल हु आर एक्सपर्ट एट सर्जरी, बट इफ यू द अदर वे इज टू डू अ करेक्टिव सर्जरी ऑफ द ड्रॉप आई. But having said that, drop eye is not a disease, so don't say curing a drop eye. Okay. Alok Sharma, starving is only option for feeding pellet. Alok, I always ask this question, मतलब why, क्यों feed करना है pellets? If your arowana is eating superworms or prawns or goat heart, then why do you need to feed pellets? I don't think starving your pet is a very humane thing to do. In my opinion, I don't think starving your pet is a humane thing to do. But yes, if you at all have to, you want to definitely ensure that your pet eats that your arowana eats pellets, then you can starve it, but there is no guarantee that it will eat pellets. Okay, so avoid karo yaar, starving and all of these things. Tejas, you saying you can gut load feed superworms with pellets and then feed it to the RO? Yeah, for sure, definitely. That's a good answer. That's definitely a good answer, Tejas. If you want to feed pellets because of the probably the vitamins and everything else that pellets have, you can gut load it to your superworms and then feed them. Absolutely correct, Tejas. Good. Yeah, thanks for answering that, bro. You're welcome, Bharat. Always happy to help, man. Okay. Any more questions coming my way? Any more questions? Anyone else interested? Can I get WhatsApp number? Bharat, you can connect with me on Aropedia, and you also have my FB account, I think, details. So you can connect me on Messenger. At the same time, can we also you can also connect with me on Instagram. My Instagram handle, I'm typing it for you. It is Arofanatic. Underscore Orofanatic underscore Avi. Okay, so you can definitely reach out to me through there. Prashant, you are saying, hi bro, can you suggest me a good place where I can get a good quality arowana? Depends, Prashant. I don't know where you are located. If you can tell me where you are located, I can probably try to give you information which will be local to you, some place which will be local to you, rather than having to go to some other place. You're from Chennai. Okay. In Chennai there is Sri Sudhan and Sri Ram. I don't know if you've heard about them. Sri Ram is a very very reputed person who's got some really great quality arwanas. So reach out to Sriram and I'm sure he'll be able to help you. He's also on FB. You can look out for him. His company is called Shades Aqua Zone. Okay, so Prashant, hopefully I answered your question. Bharat, yeah, sure. Please go ahead and follow. I mean, and I'm happy to answer your questions on Messenger as well. No problem. Okay. Anyone else has any other questions for me that I can answer today? Or, I can always again come back and connect with you guys on maybe Wednesday or on Thursday. Make a video on feeding of all fish. Yes, sure. सर्वजीत पक्का करेंगे. 100% मैं करता हूँ. फीडिंग ऑफ ऑल माई फिश करता हूँ मैं. श्योरली नेक्स्ट वीक में बनाऊंगा. एक मैंने बनाया था वैसे भी, हैंड फीडिंग कर रहा था मैं अपने क्रॉस बेली का, बट बाकी का भी मैं फीडिंग वीडियो बना दूंगा. नो प्रॉब्लम. Bharat, you have lifestyle aqua. Yes, Yadesh Raju. He's a good guy. You can reach out to him. He can help you out with some good arowanas and other stuff as well.
Sure, Prashant, sure, bro, but they don't have stock as of now. They are suggesting it will be available after 2 months. Acha, okay. If that is the case, then if that is the case, then what you can do is you can reach out to Yadesh Raju from Lifestyle Aqua. Okay, Yadesh Raju in Lifestyle Aqua will be able to help you get some quality fish as well. And if you want to come a little further up to Mumbai, then there are some good people here in Mumbai like Khwaja Sheikh and Najib Sheikh. Mainly, I take my arowanas from Khwaja and Najib. You can reach out to either one of them. They are both on Facebook. You can reach out to both of them, and they'll be able to help you. Do it with white light, bro. What? Whoa, okay. Yeah, okay. You want. So Tejas, you want my feeding video to be in white light. Am I right? If that's the case, then yes, I will do that. Yeah, I'll do that, Tejas. So Sarvajit, post the feeding in YouTube and all. Yes, Sarvajit, वो करता हूँ मैं YouTube पे डालूंगा feeding video, no problem. पक्का डाल दूंगा मैं. You're welcome, Prashant. How to groom Asian arowana? Yeah, yeah, Bharat, I will do that as well. But abhi kya hai na, there is so much of information already on Aropedia about grooming arowana that I am not too sure whether I need to do one more. But yeah, surely I can do a video. But it's really the basic stuff, for any other fish. You want to keep good filtration, good water, good food, and good amount of light. That is basically what you need to do for grooming an arowana. And I'm not a big fan of high tanning. बट हाँ रेड अरोवाना है तो यू विल हैव टू डू सम बिग टाइम टैनिंग बाय रिड्यूसिंग द वाटर एंड ऑल ऑफ दोज. आप मेरे वीडियोस देखिए, वहाँ पे है सारे टैनिंग वगैरह की इन्फॉर्मेशन. बट या इफ यू फर्दर इन्फॉर्मेशन इफ यू नीड, आई एम हैप्पी टू मेक मोर वीडियोस ऑन इट. Okay. Anything else I can help you guys with? I have super high back arowana. Great, Bharat. I mean, keep him in a good white tank with white LED light, bright white LED light, and I think it'll get good shine. Best tank size for stingray fish. Minimum 3 feet should be the width, Gurudev. Minimum 3 feet should be the width, I'm saying, okay? Length you can have, 6 feet and above. So 6 by 3 is a good 6 by 3 is a good size. Height doesn't matter because stingrays don't need height. So you can have a 2 feet height, that's good enough. But a 6 feet length at least and a depth of at least 3 feet for stingray. So Sarvajit, all week একবার করে all fish का feed না করলে ভালো. हाँ, yeah. So Sarvajit, you're basically saying that week में एक बार हमको starvation करना चाहिए क्या fish का. I think it's okay. वैसे भी जैसे मैं अपने फिश का वंस अ वीक वाटर चेंज करता हूँ, तो जिस दिन मैं वाटर चेंज करता हूँ दैट डे आई डोंट डू feeding for my fish. So in it once a week it's good to have them starve. Cleans out the stomach and all of that, especially after water cleaning anyways it cleans out the stomach, so it's a good thing. And the following day वैसे भी वो बहुत अच्छे तरीके से खाएंगे फिर, so it's okay to not feed them once a week. Okay, I think I've answered a good number of questions for you guys today. So maybe then let me come back again in a couple of days और फिर बात करते हैं वापस से. तब तक मैं ज़रा कुछ एक दो और लिंक निकालता हूँ अच्छे अच्छे फेसबुक ग्रुप से और आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे अरवानास दिखाता हूँ. ठीक है, फिर मिलते हैं वेडनेसडे शाम को इसी टाइम के आसपास. मैं लाइव आऊँगा वापस, फिर बात करते हैं. Okay, so guys, thank you so much for staying online with me. You guys all have a good evening until I come back in the next one in my own style. Peace.